Let's start with fill in the blanks. First, GDP FC, that is gross domestic product at factor cost, is equal to GDP MP, that is market price, minus what and plus what. So indirect tax, subsidy, direct tax and depreciation. So it is minus indirect tax and प्लस सब्सिडी वो मिलती है. इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, ये तो याद रह जाता है माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी और डायरेक्ट टैक्स, सो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में कंफ्यूजन, सो माइनस indirect tax and plus subsidy. Second, national income is dash concept. Final, flow, micro या stock. National income is flow concept. National income is subject matter of dash economics. क्या? Micro, macro, marginal या total. National income is subject matter of macroeconomics. Gifts and pensions are called dash income. Gifts and pensions are called dash income. Mixed national transfer या added. Gifts and pensions are called transfer income. वो कंसिडर नहीं करते हैं हम एज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. ट्रांसफर इनकम को एक्सक्लूड कर देते हैं. फिफ्थ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर डैश फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी. डिफरेंट, सेम, वेरिएबल या मोबाइल. यदि क्लोज्ड इकोनॉमी है, यदि बाहर के ट्रांजैक्शंस नहीं होते, तो क्या डोमेस्टिक और क्या इंटरनेशनल. सो क्लोज्ड इकोनॉमी है, देन इट इज सेम for a closed economy. Next, national income is study of dash economics. Micro, macro, total या intermediate. यदि पूरे नेशन की स्टडी कर रहे हैं नेशनल इनकम, तो हैज टू बी मैक्रो, MACRO, macro economics. Seventh, in India, dash is responsible to calculate national income. Central Statistical Organization, Labor Organization, World Bank या Reserve Bank. So इंडिया में हमने पढ़ा CSO, Central Statistical Organization is responsible to calculate national income. बचे हुए fill in the blanks in the coming video.